This is one of the example of the polarized light, again depending कि how the electric field is oriented. आपका electric field का जो component है वो उसको आपने किस तरीके से orient किया हुआ है, ठीक है, how in which direction that is actually oriented, ठीक है। आपके पास जो polarized light होती है that is actually again classified into the three types. तीन टाइप्स की पोलराइजेशन फिर हमारे पास होती हैं, लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है, सर्कुलर पोलराइजेशन एंड आपके पास इलेप्टिकल पोलराइजेशन होती है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर the figure. If you can see at the figure, this is basically linear polarization. आपके पास जो electric field of light का है that is basically confined in a single plane along the direction of the propagation, ठीक है। एक सिंगल प्लेन में अगर आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन किया हुआ है, सो बेसिकली दिस इज योर लीनियर पोलराइजेशन, ठीक है। ओके, so as we discussed in the linear polarization in the class as well, linear polarization के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है field that is basically oscillating in a single direction or in a that is basically that is confined actually into the single plane I can say, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या कर सकते हैं कि आपके पास that will be again perpendicular to the direction of the propagation, we know this, ठीक है, ये डिस्कस किया हुआ है हमने क्लास में linear polarization, ठीक है। if you can recall that if the oscillation does take place in only one direction, then the wave is said to be linearly polarized in that direction. When the light is linearly polarized in vertical direction, अच्छा, we have discussed this one as well. अगर आपके पास जो light है, if that is vertical polarized in a vertical direction, तो आपके पास जो electrons होंगे vertical, meaning you know that how vertical moves, ठीक है। आपके पास जो electrons होंगे that will be moving up and down, ठीक है। दूसरी आपके पास होती है, दूसरा आपके पास जो पोलराइजर होता है वो होता है हॉरिजेंटल पोलराइजर, ठीक है। अब हॉरिजेंटल पोलराइजर होता है वो पास करेगा लाइट को ना हॉरिजेंटल प्लेन और हॉरिजेंटल ऑसिलेशंस आपके पास होंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी मूविंग ओनली टू द राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन विद इन दैट। लीनियर पोलराइजेशन आपके पास या तो वर्टिकल हो सकती है, ठीक है, या तो फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द पोलराइजर दैट यू आर यूजिंग फॉर इट, ठीक है। Moving on, if you can see over here, this is just a mathematical expression that is given over here. अच्छा, okay, we know that आपके पास अगर electric field है that is basically a vector quantity, ठीक है, that is having the x component and the y component that is moving, ठीक है। Component of transmitted E electric field that is basically a vector quantity are in phase. What do you mean by that? Yes, class. Okay, moving on. You got the examples, two examples हैं यहाँ पे, ठीक है। This is your vertical polarizer that is giving you the light in the vertical manner, ठीक है। And again you got the horizontal polarizer. This is giving you the light in the form of horizontally polarized light, ठीक है। आपके पास अगर horizontal polarizer है, once light is passing through it, what you will get, these are the basically spaces over there on the polarizer, ठीक है, जिससे आपकी लाइट पास हो रही है, that is basically you will be getting only the polarized horizontally polarized light at the end, ठीक है। Similarly अगर आपके पास polarizer vertical है तो you will get the vertical component, ठीक है। Moving on, okay, the next type is basically your circular polarization. Now, what do you understand by the term circular polarization? Anyone? Yes. Circular polarization of an electromagnetic wave is a polarization state at which each point, जहाँ पे आपके पास हर point, ठीक है, electromagnetic field का constant magnitude होगा, amplitude will be the same, amplitude is not going to change at any point, ठीक है, but direction rotates at a constant rate that is plane perpendicular to the direction of the wave. As we see over here, what is actually happening, आपके पास जो है, can you see this one animation, ठीक है, play it again.
The one which is moving over here, that is basically it is the direction is rotating at a constant rate. ठीक है, in the plane perpendicular to the direction of your wave. आपकी wave जिस direction में जा रही है, आपके पास जो direction है यहाँ पे field components का, that is basically rotating.